Okay, so SPDM page number 99. So everybody use computer nowadays. Everyone knows that what a computer is, how to use it, and where to use it. Like computer is used at many places, such as offices and schools, libraries. Many places are there where we use computers. But when there was no computers, how do people work? Anybody have thought about this thing कि मतलब लोग कैसे काम करते थे and वो लोग क्या करते होंगे when there were no such facilities of technology. पुराने जमानों में तो इतनी टेक्नोलॉजी होती ही नहीं थी. So how do they work and who invented these things? So today we are going to learn about few devices which are from the past. जो कंप्यूटर बनने से पहले की devices हैं, आज हम उन devices के बारे में बात करेंगे and I am going to tell you few things about those devices. The first one is abacus. What is an abacus? Have you ever seen an abacus? I have just look at the picture of abacus. It is a wooden frame. एक वुडन फ्रेम है जिसमें मेटल रॉड्स लगी हुई हैं और कुछ बीड्स डले हुए हैं. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ अस हैव नॉट सीन इट लाइव. हमने उसको कभी लाइव देखा नहीं है. हमने पिक्चर्स में देखा होगा. बट इट इज अ डिवाइस विच वाज इन्वेंटेड थाउजेंड ऑफ द इयर्स अगो. थाउजेंड ऑफ इयर्स द चाइनीज यूज्ड the abacus, a wooden frame with rods filled with rows of beads. By moving the beads, they could add, subtract, multiply, and divide. So students, abacus is basically a mathematical device, an arithmetic device which is used to subtract, to add, to multiply, and to divide. यानी कि हमें ये पता चला कि thousands of the years ago, मतलब आज से हजारों साल पहले चाइनीज ने एक ऐसी डिवाइस बनाई थी. चाइनीज मेड अ डिवाइस विच इज कॉल्ड अबैकस. इट इज अ वुडन फ्रेम फिल्ड विद रोज ऑफ बीड्स. एक वुडन फ्रेम है जो बीड से बना हुआ है और उसको बीड्स को मूव कर करके लोग ऐड कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे और डिवाइड कर सकते थे. लाइक द वन आई हैव गिवन इन द पिक्चर. यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन. Okay. So who invented the abacus? Chinese invented the abacus. What is an abacus? A wooden frame filled with the rods of beads. एक ऐसा wooden frame जो rod से बना है और उस rods में क्या fill हुई है? Beads fill हुए हैं. What it is used? Why it is used? It is used to add, subtract, multiply, and divide. Now, the second device which we are going, the second machine which we are going to talk about is Pascaline. Okay, so Pascaline was also a mathematic device invented 1000 years ago. It was invented in 1642. 1642 में ये डिवाइस, ये मशीन जो है वो बनाई गई थी. The Pascaline was one of the first machine used for counting. ये मशीन जब बनाई गई थी तो ये किसके लिए यूज होती थी? ये काउंटिंग के लिए यूज होती थी, चीजों काउंट करने के लिए यूज होती थी. It used toothed wheels which were turned by hand. It has a wheel. In this machine you can see on the top there are few circled wheels. ठीक है, wheels बने हुए हैं जिसमें आगे ऊपर यूं करके डॉट्स लिखे हुए. दैट इज वाई, क्योंकि उसमें यूं करके स्पाइरल्स निकले हुए, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टूटेड व्हील. तो लोग क्या करते थे? दे मूव्ड इट बाय हैंड्स एंड देन दे काउंट. इट इज आल्सो कॉल्ड अर्थमेटिक मशीन. द Pascaline is also called arithmetic machine that could only perform addition and subtraction. The previous device we learned about was abacus. On abacus we can multiply, divide, add and subtract. We can perform 4 mathematical operations. But in Pascaline, we could only perform 2 mathematical operations, which are addition and subtraction. हम इससे चारों operations operate नहीं कर सकते. हम सिर्फ add और subtract कर सकते हैं. Okay, now what is a Pascaline?
Pascaline was the first machine used for counting. Why it is used? It is used to add and subtract. Now in the given picture you can easily see that there are the wheels, the toothed wheels you can easily see in this picture. What people used to do, they used to turn the wheels by the hand and then they add and subtract. Okay, now the third thing which we are going to learn today is Leibniz calculator. It was invented in 1694. Leibniz calculator जो है वो 1694 में बनाया गया था, and it is a form of calculator. We have seen calculators nowadays. सब बच्चों ने calculators देखे हैं. We have seen that what a calculator is. So this is a calculator which was invented many years ago. The Leibniz calculator could add, subtract, multiply and divide. Just like Abacus, Leibniz calculator could also add, subtract, multiply and divide. It is used to perform all the four mathematical operations. Work could be done faster with the help of hand crank. If you can see in the picture, there is a hand crank. एक handle लगा हुआ है. So people use that, so it works faster. However, the user had to understand how to turn the wheels. Okay? It is easy to work with the hand crank, but the one who is using it finds it difficult to use it with the wheels. ठीक है? उनको wheels के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ता है कि wheels कैसे use होते हैं Leibniz calculator के. But while the hand crank is quite a simple way to use it. Okay, now next thing, what is Leibniz calculator? A machine used which can add, subtract, multiply and divide. एक ऐसी machine which can perform these four mathematical operation. It is a machine. Okay, now after this we are going to talk about Charles Babbage. Who is Charles Babbage? Have you ever heard his name? He is a very famous person in the world of technology. He was born in 1833. Charles Babbage was the one who invented computers. ये वो इंसान थे जिन्होंने computers बनाए थे. He was the first person who invented the first computer. The different engine could carry out simple calculations. The analytical engine was a mechanical calculator. काफी सारे डिफरेंट जो है मशीन्स हैं वो डिफरेंट तरह से कैलकुलेशंस परफॉर्म करती हैं. हमने पिछले अभी अपने इस लेसन में हमने प्रीवियस उसमें पढ़े, हमने तीन डिवाइसेस पढ़ी, तीन प्रीवियस मशीन्स के बारे में हमने पढ़ा जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे, बट ऑल ऑफ देम वर नॉट परफॉर्मिंग ऑल द ऑपरेशंस. ठीक है, सारे ऑपरेशंस सब डिवाइसेस परफॉर्म नहीं कर रही थी. फ्यू वर परफॉर्मिंग ऑल द फोर mathematical operations, few were performing only two. Analytical engine was a mechanical calculator. इसी तरह analytical engine जो है वो mechanical calculator होता है. Like वो machine के through, मतलब पूरा वो काम manually नहीं हो रहा होता, mechanically हो रहा होता है. आप हाथ से काम नहीं कर रहे होते. It is a way more easy thing to work on. ठीक है. Now Charles Babbage is called the father of computer. Charles Babbage जो है वो father of computer कहलाते हैं. Why he is called so? Because he is the one who invented the computer. वो शख्स थे जिन्होंने कंप्यूटर बनाया था. That is why he is called the father of computer. Okay, so after this all the computers, आज भी जितने computers बन रहे हैं, if we are talking about the PCs, mainframes, microcomputers, supercomputers, we are talking about the fifth generation computers, either we are talking about laptops, mini, micro, any computer, सब computers का concept जो है वो same होता है. Like all the computers can perform, most of the things are similar in them. ठीक है. So all these plans which were on which the computer is based were presented by Charles Babbage. ठीक है. Charles Babbage वो बंदे थे
जिन्होंने कंप्यूटर बनाने के लिए क्या कंप्यूटर का काम होगा, किस तरह वो ऑपरेट करेगा, क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट और वो प्लान बनाने वाले चार्ल्स बेबेज थे। ठीक है, उसके अलावा आज भी जो कंप्यूटर्स बनते हैं वो उन्हीं के प्लान के अकॉर्डिंगली बनते हैं। मोर एंड हाउ उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, लाइक साइज में चेंज हो सकता है, मे बी स्पेसिफिकेशंस को जिसकी चेंज हो। प्रीवियस अगर हम कंपेयर करें, प्रीवियस कंप्यूटर्स बहुत बड़े होते थे, ठीक है, बट टुडेज दे वर नॉट पोर्टेबल। ठीक है, हम उनको लेके मूव नहीं कर सकते थे, हमें पावर स्विचेस चाहिए होते थे, दे नीड पावर्स, और उनको जो है हम एक जगह रख के ही इस्तेमाल करते थे। बट इफ वी आर कंपेयरिंग आवर जनरेशन विद दैट, so we have much more better computers than that. We are using laptops nowadays. The technology has increased itself and we can easily travel with the laptops. हम उसको easily लेके कहीं भी जा सकते हैं. They are very portable and they are very convenient for us. So the basic thing is this, that everything which we are doing on a computer are the same things. ठीक है, मतलब previous computers भी वो काम कर सकते थे, हमारे कंप्यूटर्स भी कर सकते हैं। मोर एंड हाउ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, उसकी साइज में हो सकता है, उसके मैकेनिज्म में हो सकता है, लेकिन मोर एंड हाउ सब चीजें काम एक जैसा ही कर रही होती हैं। सो स्टूडेंट्स, एनीथिंग विच यू नीड टू आस्क